As per Hinduism, we are spiritual. So I salute you when I say Atma Namaste, or when I say Namaste, I am saluting the light in me. My light is saluting the light in you, which is very deep. We don't understand the meaning of that. Then, second thing is the physical body. All of us are eating junk. I can give you in writing. Right? Why are we eating junk? Because our body is supposed to be 7.45 basic. And 95% of the food we are eating is acidic. आप एसिडिक फूड खा के बेसिक बॉडी को नहीं कंट्रोल वो कर सकते हो. Wheat is acidic, rice is acidic, tea is acidic, coffee is acidic. So all these things is what we are consuming. पंजाब में आए हो तो यहाँ तो कल मुझको बेड़वी पूरी और मेरा जो दोस्त है वो बोल मैंने खाया लेकिन मुझे पसंद. See, the thing is we have to realize what is the pH of food. Till we don't know the pH of food, we don't know how it's reacting to our body, right? So all what I've told you, whatever you like, whatever you are eating is all junk. And the amount of salt you are consuming is 3 to 10 times the salt which the body needs. Okay? The body needs only that much salt, like a pinch of salt for a day. And we are consuming at least 2 spoons of salt and maybe 10 spoons of sugar. Sugar is poison. Refined sugar is poison. The problem is that the food industry and the medical industry and the pharmaceutical industry is पूरा षड्यंत्र रच रही है humanity के against. Okay? Because why? You should eat wrong food so that you go to the doctor, and the doctor should take you to the hospital, and he wants to make sure that you remain in the hospital. He doesn't want to tell you. I'll give you a very small example. In the US, if I have cold, they won't give me antibiotics. They won't tell me to stop drinking cold water. Right? If I keep drinking ice water, मेरे को जुकाम तो रहेगा. अब उसने 21 दिन की एंटीबायोटिक खिलानी है. That is his job. So I'm just telling you how various elements are working towards creating ill health for us. And health is mental, spiritual, emotional, and physical health. Now, mental health क्या है? Good faculty. Our mind should, be able to process everything, right? We should be able to 3 arts: reading, writing, and arithmetic. Besides that, the mind is a very potent, very potential, very highly, powerful piece of God's creation. Do you agree? We are anyway the most advanced brain we have as per the evolution of living beings. But the fact is that the mind needs to remain happy. Nobody trains us to be happy. Have we got any training in any place how to be happy? No? Or yes? हम सारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुश कैसे रहना है वो कोई नहीं सिखा रहा है. तो मेरे को दो ना opportunities to talk. So, see, I'm the master of manifestation. And I'm not claiming just like that. I've done 25 years of study on the book The Secret. How many of you have read the book The Secret? Or how many of you know the law of attraction? Law of attraction? Nobody? Sorry, man, you're missing something in life. Tap it up. बेटा मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ. ओके, मेरी एक बहुत छोटी वर्कशॉप है. मैं अपनी वर्कशॉप नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इफ यू वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, create a picture. Create a picture of what you want in your life, and that picture should answer what, when, where, why, how, of what you want in life. Simple. ये किसी ने नहीं सिखाया आपको स्कूल में. सिखाया क्या? कॉलेज में भी नहीं सिखाया, पोस्ट ग्रेजुएट में भी नहीं सिखाया, तो क्या किया? Whatever you want in your life, please note this down. This is the most important mantra I can teach you in the shortest possible time.
whatever you want in your life, whether health, whether wealth, whether relationship, whether charity, whether divinity. Answer these 5 questions. What do I want to do? Why do I want to do? Where? How much? And when? That's it. Not in writing, but in picture. The moment you can do that, half of the job is done. Does it make sense? अभी जैसे इन्होंने डिफाइन किया कि इनकी लाइफ कैसे चलेगी, बट लाइफ इनकी वैसे नहीं चलेगी, मैं लिख के दे देता हूँ. But yes, he has a plan, which is good. At least, okay, he has a plan, which is very good, and I acknowledge that. So I'll share with you something very nice. When you dream, you don't dream with your constraints. Okay? When you dream, don't dream with your current constraints. Because God is there to make your dreams come true. When you dream what? You don't dream how. And what I'm teaching you is how to use your right brain. All of us are being trained to use our left brain, which is putting the cart before the horse. हमको उल्टा पट्टी पढ़ाया जा रहा है. इंजीनियरिंग पहले सिखाते हैं, मैथ्स पहले सिखाते हैं. हमको ये नहीं सिखाते कि पिक्चर कैसे बनाएं. यस, जब बच्चे थे तब सिखाया था, उसके बाद भुला दिया. It is more important to be an engineer than to be an artist. Yes or no? Right? But if you are an artist, you will be a better engineer. Does it make sense? See, the right brain is the master of the left brain. I'm not saying that, it is said in the books. So, right brain is an intuitive, creative, childlike brain. Right? Does it make sense? Any questions? Right brain is more important than the left brain because left brain is the servant of the right brain. जबकि हमको ट्रेनिंग दी जाती है, प्लानिंग करो, एक्शन करो और अचीव करो. ये तो नो, यही सिखाते हैं सब इंजीनियरिंग में. लॉजिक सीखो, एक्शन पॉइंट्स बनाओ, प्रोजेक्ट प्लान बनाओ और दौड़ो. वो प्रोजेक्ट प्लान क्या करेगा कोई पता ही नहीं है. So what I'm trying to say is create the picture of the end state of the project. Does it make sense? For example, अगर मैं CEO of Honeywell बनना चाहता हूँ, that is the dream I have. I don't have a dream to join Honeywell as a trainee. I have a dream to be the CEO of Honeywell. What will it mean? I will have a BMW outside my house. I will have a house in New York. I'll have another house in Delhi. You have to imagine all these in real. I will do this exercise with you. You can take my name. You have this name and on LinkedIn, तो आत्मा देखा था, right? Please connect with me on LinkedIn, and then we will do this exercise of how you will achieve your dream. And why I'm saying so is everything else is not consequential. अगर आपकी ड्रीम ही अचीव हो गई तो बाकी सब तो हो ही जाएगा ना, right or wrong? कभी And I'm ऐसा not नहीं giving the answer. You are going to give the answers to yourself. Does it make sense? अब ये साहब जो है अजय साहब क्या करते हैं, दोबारा बताइए. I deal in technologies and my major goal is like बच्चा मी कोल्ड कॉफी पीना like to main सकाळ बसने मी रात्री बसने काय नाही खाल्ले. or the technology translation, identifying technologies, identifying problems, and we wanted to get these technologies to the end user. Okay, now I'll ask you a question. Have you visualized the end state of your job? Which means if you have 200 technologies available, what will you be able to achieve in next 5 years or 10 years as end state in pictures? Yeah, we have imagined that. Like You have it as pictures. yeah, not as pictures. It's in the mind only. It's in the mind. Yeah. Okay. No, I'm not. It's all right. Yeah. That's the way we are trained. Yeah. So I would request you to do an exercise with me.
outside this classroom to define at least say 20 technologies and then define what will those technologies achieve for the society, for the humanity, for you, for the delivery SPV. You understand SPV, special purpose vehicle, right? So the whole value chain. So the moment we are able to look at that in picture, you will see that everything starts happening by itself. Your life will become easy. Does it make sense? It's all right. I'm telling you, it will become all right. I'll give you an example. All right. So when I say dream what, so let's look at what the highest dream all of you have. Please tell me the highest dream you have, each one of you. Write it down for yourself. First speak and then write both. And it is voluntary. Those who don't want to do it, participate, that's your choice. बेटा ये ले लेना. Sorry. बोल देंगे. चलो बोलो, जोर से बोलो. Yeah. To be a good entrepreneur, to be a good engineer. यार तूने तो मेरे को फेल कर दिया. मैंने कहा what, when, where, why, how of your dream. My dream is to settle in Germany. That's good. Why? Because I love. They keep doing new innovations. क्योंकि वहाँ की गर्ल्स अच्छी होती है. Anyways. Working upon new technologies. Right. And in recently 5 to 10 years, I will be in there. इसमें आपने when and where and how नहीं आंसर किया. How by continuously getting experience. ठीक है, good attempt. Thank you. I want to give others a chance. Sir, I have joined this course startup to develop myself and to grow maximum people with this project. Help them. So therefore this project will lead to what? What is the end goal of this project which you want to drive? First, I want to start it. Then I want to give to maximum people. Join with it. बहुत मैक्सिमम पीपल को आप क्या देना चाहते हैं? यही प्रोजेक्ट आगे क्या प्रोजेक्ट? जो मैं स्टार्टअप का प्रोजेक्ट मेरा बनेगा, ओके, उसको मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. देखिए अभी भी आप बहुत नेबुलस बातें कर रहे हैं. नेबुलस समझते हैं? नेबुलस का मतलब होता है कि धुएं से भरी हुई बातें हैं. तो जरा स्पेसिफिक हो जाइए नेक्स्ट टाइम. या यू. What do you want to be? What is your big dream? What, when, where, why, how? प्लीज लिखिए जो भी है. ये 5 क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे. What, when, where? What, when, where, why, how? Currently, first I will start as equity research analyst. Then I will move towards my. बेटा तुम पता क्या कर रहे हो? नहीं, मुझको माउंट एवरेस्ट पे बैठ के बताओ कि लाइफ कैसी लगेगी. मुझे ये मत बताओ कि बेस कैंप से मैं कैंप 1 जाऊंगा फिर कैंप 2 जाऊंगा. That is all right. That is part of the life. My question is different. You are answering a wrong question. What do you want to be in your life and how big is your dream? My ultimate goal is to be financially independent. What will financial independence look like? भैया 10,000 रुपए में भी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ और एक बंदा 2 लाख में भी नहीं होता है और दूसरा बंदा 10 लाख रुपया एक दिन में उड़ा देता है. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ definition for different people. तो मतलब पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े. मैं अपना मर्जी का कुछ कर सकता हूँ. और मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरे को अपना खुद का जो भी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आऊंगा उसके बाद अपना एक ऑर्फनेज होम खोलना. ओके ठीक है, थैंक्स. What about you? See, what I'm trying to do is I'm forcing you to think. If I can force you to think and answer that question, it is half of the problem solved. मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई अपना विजडम सिखाने को नहीं है. But the moment you can define what, when, where, why, how of your life,
कि अभी आप सिर्फ कैरियर पे फंसे हुए हो. What about relationships? What about health? What about giving? एक और चीज, एक फॉर्मूला बताता हूं, सबसे बड़ा फॉर्मूला है जिसने अभी तक किसी ने नहीं बोला. Right? In giving you get. If you want to be a billionaire, you have to have 1,000 millionaires. You have to have the capability to create 1,000 millionaires. Then Yes, sir. only you will be a billionaire. And to be a billionaire, you have to have charity of 10% of that amount. Why is Bill Gates? What do you think Bill Gates is doing charity of that order? He will be the richest person on earth because he will become the first trillionaire. He has understood the law of money. Okay? The law of money is in giving you get. अभी मैं आपको दान करने को कहूंगा ना तो सारे भाग जाएंगे. दुनिया के सबसे छोटे नोट हिंदू के मंदिरों में मिलते हैं. नहीं, 10 रुपए, 5 रुपए, 54, 58 सारी वहां मिलेगी. While they don't understand the law of money, the law of money is tithing. Do you understand tithing? Who understands tithing? It's a Christian, it's not a Christian concept, it's a Buddhist concept too. Right? So tithing means 1/10. 1/10 of what? If your income is 100 and your expenses is 70, your available savings is 30, right? You should donate 10% of this 30, which is 3. तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 70 रुपए आपका खर्चा है तो आप कम से कम 3 रुपए दान करेंगे. That is tithing. Okay? And the more you do, the more you get. In giving, you get. Right? That is the law of money. Nobody taught you this also. तो साला इस इन institutions को बंद कर देना चाहिए. Sorry, they have a purpose, but they are not teaching us the basics. We are all chasing money. Nobody is teaching you how to make the Lakshmi ji happy. Right? Nobody is teaching us the law of money. Nobody is teaching us how to be frugal, how to be a minimalist in life, right? And then become a millionaire. Does it make sense? If my expenses are low, I am satisfied, I'm already happy. If I'm already happy, I will create more happiness in the world. Right? Either I am a vacuum. मुझे चाहिए. Even a millionaire may be looking for more money. He is less happy than a guy who is attracting millions, but he is satisfied. Yes or no? So we have to be abundant. Please go to the Google and study the meaning of abundance. We are all supposed to be abundant. Let me share with you 7 characteristics of God. 7, and we are all individuations of God. What does individuation of God mean? So Aham Brahmasmi, right? Egoistically नहीं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, but I have an element of God. And what is God? God is beautiful. Note करो इसको. God is beautiful. God is abundant. God is kind. God is creative. God is generous. God is receptive. How many of these? There is 6 or 7. Beautiful, love miss कर गया मैं. God is love. God means higher consciousness. God is a word created by religion, but higher consciousness always existed. Why do we breathe? Does anyone know? Why do we breathe? Not because of oxygen. We breathe because we are in connection with the higher consciousness. All right? The higher consciousness drives into our system. All our cells are alive till we breathe. Why? Right? So what I'm trying to tell you is
that we are all connected with God, we are all one. But when we are one, brothers fight. Right or wrong? So the point I'm making to you, philosophy नहीं बता रहा हूँ, बहुत deep बातें बता रहा हूँ. So what I'm trying to tell you is, if you understand how air, water, food interacts with your body to give you happiness, that's the most important ecosystem to learn. Yes or no? You sir. How air, water, food, spirit, which is part of me, interacts with me to make me happy is the most important lesson to learn in life. क्यों साहब ठीक बोल रहा हूँ? Thank you. So this is one aspect, right? Now let's look at the 7 words I said. And let me tell you something. If any of you is unhappy in life, you can check you are unhappy because one of this is scarce. Out of these 7 dimensions which I've given you, either there is love missing in your life, either there is abundance missing in your life, either you are not receptive. So many people don't want to listen, right? You are not receptive. We are not ready to give space to the other person's opinion. Right or wrong? We are not kind. We are not kind to ourselves. We are not kind to others. Yes or no? मुझको तो इंजीनियर बनना ही है. किसने कहा था? पापा ने कहा था. मैं नहीं बनना चाहता इंजीनियर. मेरे पापा ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया और फिर मैंने एमबीए भी कर दिया. Because I want to make my father happy. Please ask a question. What I am doing today and why I am doing it? Is it because you are trying to make your mother happy or your father happy? क्यों? Yeah, no, but we don't know. We just don't know this aspect at all. Do we love ourselves? वो साहब इतने मोटे हैं जितने मेरे मैं हूं. So he is abusing his body. And I am abusing my body too. Right? So if I am abusing my body, which is the most precious vehicle on earth, right? Tomorrow if I get unwell, I will be dependent on the medical system of the country. Right? So we are not able to appreciate the preciousness of our body. Do we have a regular lifestyle? No. All kids are busy with social media, including myself. Right? I may be busy with LinkedIn, they are busy with social media, Facebook. Correct? So what I'm trying to say is time is precious. We are here for a limited period of time. We have dreams. We have dimensions. These are the 7 dimensions of God. And that is what we are. Something is missing when we are unhappy. Does it make sense? Please do it. Check it out anytime. And if you don't get the answer, call me. Right? Receptiveness, kindness, love, creativity, right? Beauty, if I'm not beautiful, or if, and what is beauty? Beauty is not a Miss Aishwarya Rai. Beauty is the beauty of this precious body given by God for us to live on this earth. Correct? Anything else? I think I'm done. Generosity is giving, which is the first law. In giving, you get. If you don't give, you don't get. I'll give you a very small example. Okay? अगर तालाब का जो पानी है वो स्टेल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तालाब में अगर पानी होता है तो वो स्टेल हो जाता है. मनी का भी यही हाल है. आप $1 बिलियन रख लो, वो उड़ जाएगा. लेकिन आप $1 बिलियन में से $10 मिलियन दान करने शुरू कर दो, वो $1 ट्रिलियन बन जाएगा. ये लॉ है.
This is the law of money. Okay? There is a book by my guru. It's called Achieve the Impossible. And it comes for only 136 rupees in India. The writer is Master Chok. Achieve the impossible. It is spiritual business management. It tells you how to do your business, how to live your life, how to achieve your dreams. Master, CHOA, Chok, KOK. You can send me your request. I'll send you the gift. You need not buy it. Okay? So you can note down my number, which is my WhatsApp number, +1 734 +1, which is US 734 355 7828. Send me a WhatsApp request with your address. You will get the book. Anything else? 355 7828. और अगर दान करना है तो दान कर दीजिएगा. Sir, kindly Your donation, but you know, that's up to you. Sir, please repeat the number. Tell me what you want to achieve in your life. Sir, drop your mobile number in the chat box. Yeah, sir. Please. Your voice is not that much clear. I will spend 10 minutes with you as you are your company. Others, I will be just repeating what I've said. Acha, it was online as well. Yeah. ठीक है. Thank you. What about you? What is your dream of your life? हाँ, चलो आप बताओ. नहीं, you are. He is interested in your life. Myself, Dr. Vichar, Yeah. at the Center for Nanoscience and Nanotechnology. Nanoscience. Beautiful. I have also founded a startup, Nanotech Innovations Private Limited. You need funding? Yes, obviously. Okay. I'm serious. Yeah, idea to unicorn.ai. My contact details are there. This is my support to startups. Yes, sir. Myself, Vikram Singh Thakur. I deal in. क्या बात है ठाकुर साहब. कहते हैं ना सर, सिर्फ नाम में ही नाम है. Normally, I am dealing in a financial products, and I am here because I don't know what I want to be. Come to That I am here to explore myself. And that is all our I'm laughing at you. I'm laughing with you. But when I am laughing at myself, I'll give time to myself. Then I will explore, and I have to explore here how I want to be there and what I should do. चलो आपको एक ना बहुत अच्छा ब्लिस का एक्सपीरियंस देते हैं. Okay? And you also. Yeah, but let's experience bliss. ठीक है? सबके सब अपने पांव जमीन पे रखें. अगर झुकने उतार रहे तो अच्छा है, नहीं उतार रहे तो कोई बात. You should feel and experience either the surface of your shoe or the surface of the earth on which you are sitting. Please stop doing. Those who are busy can get out of this room. Sorry for that. So now put your hands on your thighs, facing upward. Close your eyes. Imagine the happiness, the most happy moment of your life. Maybe when you got married, maybe when you were born, or maybe when your mother gave you the first big chocolate. So close your eyes,
deep breathing. A deep breath means full breath. Inhale, and you are taking this inhalation up to your navel. And at your navi, you are pulling it in. You are even pulling your anus inside. And let this, when you exhale, you are exhaling up to the emptying of your abdomen. So we'll do this 16 times, and when we are doing this 16 times, I want to see the smile on your faces. Many people are not smiling. You are in front of your God. So whichever God you believe in, and I was told that all of you believe in God, that God has come on this earth to give you a blessing. And at the time of Diwali, you are seeking that blessing. Please think of the dream which you want to achieve in your life, and the God has come to give you the blessings that dream will come true. While this is happening, we are going to deep breathe 16 times the way I've just explained. And when we are deep breathing, the toxicity or the negativity of any element of your life is coming out of your body as vapor, as brown or gray vapor. So you are in front of your God, and God is nothing else but white golden light, which is like sun. You may imagine sun at the top of your head, few feet above, and your hands are facing upward, and you are deep breathing. Please smile. I want to see the biggest smiles on your face. Yeah? Please smile. God has come to you to give you the best boon you want in your life. And now let's keep deep breathing. And every time you breathe in, hold for as much as you can without hurting you. And then exhale. When you exhale, you will hold without hurting yourself. And this will continue for some time. You can imagine to be in the shower of white golden light. And that shower is going through your body, cleansing your organs, releasing all the toxicity of your body, removing all the diseases which you have. And this white light is going deep into Mother Earth from your feet and from your tail, tip of your tail, 10 feet deep. And this is the shower of white golden light, which is divine. And your mind is focused on achieving your dream, and your body is exhaling all the toxicity of your body. And I will keep quiet. Please do this 16 times. Thank you.
Slowly open your eyes in the deep, deep smile. Any questions? Yeah, please go ahead. Professional success, not just some of it, right, but it is a team effort. So there is a team of, let's say, 20 or 50 or 100 people. How to everybody motivated and everybody, how to take along everybody with you. Because sometimes there are conflicts also. Some people may not be happy with your decision. As a leader, you have to take many decisions, and with every decision, some people are happy while people are not. How to deal with such? What is the job of a leader? What is the job of a leader? Or four things, or what are the 4 or 5 jobs a leader does? That is one. What else? Okay, that is 2. What else? And to work and to make the team work for achieving one goal. Okay, number 3. What else? Get the job done. Get the job done. Okay. Regardless of it. 4. What else? To the people. हाँ तो टीम में है तो सुनना तो पड़ेगा काम भी है भगवान people. Yeah. What else? You haven't said the most important 2 things. What is the role of a leader? Get an example. So that is, yeah, that is okay, but that is one aspect. First thing is, what is the mission? Where are we going? To articulate the objective of the mission. Right? Where are we going? How we will reach there? This is the most important job of a leader. Right? Number 2 is the servant leadership. How many of you have heard servant leadership as a word? Or level 5 leader? Level 5 leader, please go to Google and say what is the meaning of level 5 leader. You have cell phones. Who is a level 5 leader of, as per the book Good to Great? As per the book Good to Great, go to ChatGPT. Please write down what is the role of the lead. What is level 5 leader as per Good to Great book? And see the answer. Huh? Okay. No, this is not answering my question in ChatGPT. Go to ChatGPT and say, what does level 5 leadership mean as per the book Good to Great? And please come and read it. One of you come and read it. Leader who embodies the paradoxical combination of personal humility and fierce professional will, focusing on the long-term success of the organization over personal recognition. Is this all? These leaders take responsibility for failures and attribute successes to their teams, drive sustainable results, build successors, and possess a quiet strength rather than a charismatic personality. The key characteristics are personal humility, professional will, ambition for the cause, responsibility and credit, building successor, quiet not charismatic, and long-term focus. ये बेटा मेरे को forward करो मेरा number 971, though I didn't find it, but awesome. This answers your question, what to do with the team. If you read the 5 characteristics of the leader, which is said in the end, those are the most important characteristics of a leader. If you are following all of them, you will not have conflict in your team. Because the mission is clear.
You are focused on the mission, not on the people. Right? And you are empowering them. You are not doing micromanagement. That's not a level 5 leader. Micromanagement versus empowering. Right? Delegation. What is delegation? Who understands delegation? अपना काम बाकी को देना. No, yeah. Oh God. Delegation means assigning the job, okay, but taking on the responsibility of the job. And if the junior fails, make sure that you deliver. It's very deep. Delegation is not as simple. Leader का मतलब है आइए, job कीजिए, नहीं लेके आए, पैंट उतार देंगे. Sorry. So, job is to empower the individual. Even the person has failed, you are not demeaning the individual. You do not know what background that person is coming from. Right? If you have been given the job of being a leader, you have to be aware of that others are also kings of their house or queens of their house. Right? Do we do that? No. हमारे managers तो थे बहुत. Right? क्यों भाई TCS में? I'm from TCS, so don't worry. Yeah, so delegation is very complex process in itself. You don't delegate a job if it is critical. ऐसा नहीं है कि critical job है. अब मैंने presentation बनानी थी. ये presentation मेरे colleague ने बनाई है और 10 मिनट पहले आई है. और अगर ये नहीं आती तो मेरा बैकअप था. मैं उसको डांट नहीं रहा था. उसको मैंने 2 घंटे दिए थे. उसको 10 मिनट में बन जाती. लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा. It took his own time, delivered it in time, and the job is done. And I will appreciate it. Right? So appreciating an individual, empowering an individual is the job of the leader. Have I answered the question? So it's a complex, leaders are paid millions of dollars because they know what to do and how to do it. Right? Appreciation हमेशा पब्लिक में करनी चाहिए. सिंपल सी बात है. आज अभी आप रोटी आप अभी लाए हो तो आप कहोगे कि परसों की रोटी अच्छी थी. You have to do it right there. The person has to feel good. Right? See, what is important is for us to develop our personality. And our personality is a blend of the training, programming given to us by our parents, given to us by our seniors, given to us by our environment, right? And let me tell you something, and it's very, I should not say this in Chandigarh, but let me say, daru pina, no. Meat khana, no. Why? And overeating, no. Why? Can anybody answer? Anji? To keep our health good. Sattvikta. To be sattvic is the only way to achieve divinity. And that's the purpose of our life. As per Hinduism, what is the purpose of our life? To reach nirvana? Or is it to become the CEO of a company? Huh? No, I did say that I believe in abundant spirituality. That I will be abundant, I will not renounce the world, and I will be spiritual. That's my philosophy. I will be the richest person on earth. You are invited to my private jet on 1st October 2028 at Terminal 3. Indira Gandhi Airport. But that is my dream, and I will achieve it because I know what I'm doing. I've lost 1,500 crores. I know how to gain 1,500 crores. All right. So
what I'm trying to say is you have to know what you want, you have to know what you have to give. Whatever you want to get, you have to give. You have to know what the price you have to pay. Life is like a restaurant, self-serving restaurant. वहाँ क्या होता है? You choose what you want to eat, right? You choose. उनको कोई भाई नहीं कहता कि ये खाना, आप choose करते हो, ठीक है? उसका price pay करते हो, फिर खाते हो और चले जाते हो. That's what life is all about. ठीक है ना? Thank you, man. Any other question? Those who want to contact me, that is my name on LinkedIn. Please send me. All of you can send me invite right now. And there is a workshop which I am conducting over. How many of you are interested in business or startups? So please enroll right now. I'm good. Please come here. Note down all their names. Ask them whether they would like to participate in our workshops on 1st and 2nd November. Right here in STP 5, we are organizing 4 or 5 workshops, and I will show you the workshops we are participating. First is visioning, business visioning. It will have 50% of what I've told you today and more. So one workshop is for say 2 hours or 3 hours on business visioning. Let me see what I. एक बार इंटरनेट मिलेगा? अच्छा चल रहा नहीं, मुझे सफारी दिखाओ कहाँ? सफारी नहीं होगा, हाँ जो भी है, हाँ Chrome is at bottom. हाँ Chrome is at the bottom. All right. हाँ मिल गया. Please इनके नाम note करो, अंकुर. Note down the people who want to be interested. I am not saying everybody should listen to me. I am very boring. And it's not all are not connected by me. I'll share with you the workshops we have. And they are one of the most, they are proprietary workshops of idea to unicorn. See, these are the workshops. Wow. Excellent. So the workshop one is Dream Life Workshop or Business Visioning. Those who want to participate can give their names. I'll tell you the price. If you are a student, then it is very low cost. Early bird up to 23 October, only 1,000 rupees per workshop. Okay. So first one is Dream Life Workshop. Second, which is conducted by me. Second one is Crossing the Chasm. How many of you understand Crossing the Chasm? Technology में innovator तो आ जाते हैं, early majority नहीं आती है. उसको लाने के लिए एक strategy होती है. That is called Crossing the Chasm. I've done it more than 3 times successfully in this country. So I will teach you how to cross the chasm. Then all those people who are into business, they understand the value of equity. How to grow without diluting your equity is conducted by my friend Kundu, Sam Kundu. This is workshop 3 or workshop 2 on day 1. And workshop 4 is, this is my professor, CA Makkar Saab, but I think we'll do something else. I don't know why he's saying he's so keen on this workshop. Finance for non-finance executives. Fine, we'll keep it because that's what he wants. Right? I have a 5th workshop called Idea to Unicorn, which is the name of my company. So 7 steps to unicorn. That's a separate workshop. Each of these workshops for executives and startups is for 3,500 rupees. Early bird is 2,500. It's all written here. And if you sign up for 3, the 4th workshop is free. If you sign up for 2, there may be some discount. I don't know what they are. You can register now, or you can register with Ankur, or you could go to this site, which is idea2unicorn.ai. Idea number 2 unicorn.ai. The flyer has the website, and these are the workshops. All right. And we have a dinner on 31st, which is for 2,500 rupees, where you will have the
chance to meet investors of Punjab. So if you join us for dinner on 31st at 5 p.m., location will let you know. It's either Marriott or Hyatt. Marriott is giving us very high cost, so we don't know whether we'll be in Marriott. Then we have, any one of you want funding? 1, 2, do you have pitch deck? 3, 4, do you have pitch decks? Please send it to me. Send it by WhatsApp. +1 734 355 7828. And you are looking for pre-seed, seed or angel. Pre-seed तो कोई देता नहीं, but दे दूंगा मैं. All right. Pre-seed is normally done by family, friends, and fools. So I'm a fool. Pre-seed is a round of 3F, and it's called family, friends, and fools. Because the highest risk takers are family, right? Or fool. Any questions? There is a phone number there. You can even respond to. I think ये उसका number है ना? Ankur, this is Keshav's number. ये number जो है 9878600316. Or you could send it to punjabangelsnetwork.com. Whatever questions you have, we will answer them. Yeah. Thank you. बेटा मेरे पास वेल्थ है नहीं तो मैं क्लास No. Good question. Good, very good question. Very good question. बेटा क्या करते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं. 70% में एंजल फंडिंग करता हूँ, 20% में सीड फंडिंग करता हूँ और 10% प्री सीड करता हूँ. Okay, that is one. So I've de-risked myself. Second, okay, let me give you, now that I'm here, I can speak for more. Give me 5 more minutes. Don't get bored. What is an idea? Now I'm going to teach you something which is very important in startup setup. All right? It is coming from stage gate methodology. Yeah, I'm done? No, Mike. Okay. Okay. So stage gate methodology. Who has heard of stage gate methodology? Marketing किसने करी है? Marketing में idea to launch के क्या steps हैं? किसी को मालूम है? Idea to launch? Okay, when I was a student, I was taught idea, concept, proof of concept, which is test market, and then test market, and then launch. Okay? Similarly, there is a 5-stage, 5-gate process propagated by a Canadian. Most probably his name is Edgett. I have that book here. I've used that book since '93. I found it on the roads of Bombay. So I was lucky. I don't know how that book came to me. And idea, any person who wants to do business should write a 1-page idea. Okay? That idea will be, it will have, what am I doing? What problem am I solving? For whom am I solving? How I am solving the problem? What technology will I need? What processes will I follow? What is the price of that service? It is just 1 page. Okay? What will it mean when it grows to be the big idea? And then how it will serve humanity. This is 1 page, and if you give this page to 10 people, 8 people should say wow. If they don't say wow, please don't do business. I'm telling you, you will fail. अगर आइडिया इतना सुंदर नहीं है कि 80% लोग खुश हों उस आइडिया को सुन के, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना? Yes or no? Right? तो आपने बिना इन्वेस्टमेंट के ये पता चल गया कि आइडिया फेल होगा कि सक्सीड होगा. That is stage 1. And the gate 1 is, I told you, the gate is 8 out of 10 people should say wow.
right? Now, once you have the idea, you write a concept paper. The concept is around 6 to 10 pages. And it includes everything, the same things which I've just told you, but a bit more in detail. The target audience, the solution, the day before, the day after, day before my solution, the day after my solution for each persona. How many of you understand persona? What is a persona? What is a persona? Beta, persona is a target audience for different segments, right? Different segments जिसके लिए हमने solution दिया, उन segments पे हम क्या benefit दे रहे हैं? What is the problem I am solving and what is the benefit I am offering? That benefit may be different for different personas. This is all enumerated in your concept paper. Then, how am I delivering the solution? Right? Then, after that, what is the technology solution which will support this delivery? Right? It may be a platform, it may be a whatever, it may be something, whatever. Right? So, what is the technology used and how it is used and how it will deliver? Then, what are the processes which will follow to deliver the service? How we will acquire the customers? Marketing. What is my marketing process? How am I marketing and acquiring the customers? Then what are the numbers? Broad numbers. What is my target for year 1, 2, 3, 4 as numbers? As once you know the price of your service, you have the revenue. And the moment you know the cost of the service, you have the cost. So you have gross profit. Right? All this is the concept paper. So if this concept paper is written well, then there is a checklist. So against that checklist, you will check whether you are having a go or a no-go. So this is stage 2 and gate 2. Then you have proof of concept. How many of you understand MVP 1? MVP 1, MVP 0. What is the difference? Anybody? What is MVP? Yeah. So what is MVP 0? नहीं बेटा, प्रोटोटाइप जो है काम नहीं करता है. MVP 0 is मार्केट में लॉन्च करते हैं आपका आइडिया काम MVP 1 is a fully delivered product or a service. And till you don't reach MVPs 1, you are still vapor. Right? Angel investor MVP 1 के बाद आता है. और pre-seed or seed helps you to convert MVP 0 to MVP 1. Does it make sense? Right? So this is stage 3. After that, it is test market. So you define in which location you will sell, which city or which state, how much will you spend as a marketing budget, how many customers exist in that market, what percentage of that you will acquire, and what will be the process of supporting the sale. All this is test marketing, stage 4. And then the gate 4 is, did we achieve our objective? If you didn't, you won't launch. Does it make sense? So these are 5-stage, 5-gate process, which is part of the methodology which I teach, right? And which is there. I will put up if you go to my LinkedIn, there are posts and there are 9 books which let me show you a picture. Gentlemen. Let me see if I can find that picture. I have it on my cell phone. So there are around 10 or 12 books which are important for a startup. Okay, the first one is Gita. फल की इच्छा मत करो. Right? कर्म की तैयारी, फल की इच्छा मत करे इंसान.
which means you have to be detached from the success or the failure of your enterprise, right? Then only you can survive. कल को लॉस हो जाएगा तो आप सुसाइड कर लोगे. Then the second one is the book The Secret or the Law of Attraction, which is the end state. If you know the end state of your business in 5 simple questions, which is what, when, where, why, how, you will be able to create a plan to achieve that end state. It happens automatically because the subconscious works to deliver that end state. Okay? मैं कोई मम्बो जम्बो नहीं बोल रहा हूँ. Right brain is the master and the left brain is the servant. That's a known fact. The problem is everybody is taught to train themselves on the left brain. Make a plan, take actions and achieve. इतना जोर लगाना पड़ता है वो नानी याद आ जाती है. But if you plan the end state in picture and then leave it to God to work on that picture, your processes become simpler. You meet somebody who gives you money, you meet somebody who has a solution. You won't believe जो मेरा project है अथानंदा उसमें magic हो रहा है. मैं कुछ सोचता हूँ वो manifest हो जाता है. Okay? मैंने सोचा कि मैं कृष्णा के लिए ये करूंगा, वो स्वामी मुकुंदानंदा ने सब कुछ कर रखा है. I have to just tie with Mukundananda ji. Then I did something else, like I want to create an online university. There are many softwares available already doing online university businesses. I have to just use that as a SaaS model, pay per use. Technology is already available. Yeah? So the more you visualize, the more you are able to find solutions through your subconscious mind working to solve the problem. Let your subconscious mind solve your problem. Does it make sense? What else can I teach you? So ये 3 किताबें हो गया. Crossing the chasm. Crossing the chasm में, if you have multiple solutions for your technology or your solution, find 1 or 2 and attack only those 2. If your solution is meant for 6 to 8 segments, identify the top 2 segments and just chase those 2 segments. That is crossing the chasm. You will succeed. Then, most important thing, please share your equity. If you are an entrepreneur, you have a choice to eat a small pie. You can have a small pizza, or you can have multiple slices of an extra large pizza. That choice is yours, right? अगर आप अपनी इक्विटी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी पाई बनाएंगे. अगर आप इक्विटी आसानी से ओपनली with a mathematics which the CA will teach you, or you may learn because you are a CA, आप शेयर करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट और बड़ा बनता है, आपकी पाई और बड़ी होती है, right? And maybe आप देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा लाओ और एक स्मॉल पर्सनल पिज्जा लाओ, right? और उसमें से 2 स्लाइस जो हैं दूसरों को दे दो और बाकी सब अपने पास रख लो. तो एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा की 2 स्लाइस जो है वो स्मॉल पिज्जा से बड़ी होंगी और आपको 4 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा. So it's up to you. Your philosophy towards equity decides the flight of your enterprise. And then there is Six Sigma, and then there is Maxi Marketing. That's all in the workshop. Please come and join us. Thank you. Any questions? How many of you want to participate with us in the workshop on 1st and 2nd? Are you a student? तो बेटा 4 जो वर्कशॉप है आपको 3,000 रुपए पड़ेगी. And we are giving you tea and coffee free. Maybe 1,000 रुपए की तो चाय पी जाओगे. Right? So being a student, it is available for 1,500 rupees per workshop. If you enroll before 23rd October,
it is for 1,000 rupees per workshop. And all of these workshops are well designed, executed by 30 to 40 year experienced people for your benefit. Yeah. You have a choice. You want your wife, you want a private plane in 3 years, or you don't want a private, or you want a private plane after 20 years. वो भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. See, the point is you have to define the purpose of your enterprise. Some people created a purpose to sell it to a large company, right? And then create another business. That's the purpose of the enterprise. Very unemotional, very straightforward. अगर कोई बड़ी कंपनी कुछ कर रही है, वही चीज आप करनी शुरू कर दो. You will get 5-10% of the share. At some point of time, that big company will buy you. Right? पार्ले के साथ क्या हुआ? पार्ले was bought by Coke. Yes or no? कौन मिनिमलिस्ट क्या? मैं वही कह रहा हूँ. Me too is a very good strategy. You don't have to be an innovator. एक और गुण सिखाता हूँ. To be a millionaire, you should be able to sell salt half a cent cheaper than somebody else. कोई कुछ नहीं करने की जरूरत. If you can sell salt 1 rupee cheaper than somebody else, you will be a millionaire. क्यों भाई? टनों में नमक बिकता है. कोई कुछ नहीं कर रहा है. कोई MBA करने की जरूरत नहीं है, कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है. Find a way that you can sell salt 1 rupee cheaper than the other person. Do you know the story of Sears? Sears is a very big retail chain, now almost dead in the US. You know why Sears became Sears? There was a time 30, 40, 70 years back, which was catalogs. अमेरिका में कैटलॉग्स बहुत होते थे. कुछ भी शॉपिंग करना है, कैटलॉग पढ़ो, उसमें से प्रोडक्ट चूज करो, उसको ऑर्डर करो, वो आपके घर डिलीवर होता था. Sears built a catalog smaller than the most catalog, smaller in size, right? मतलब कि अगर वो सब A4 पेपर था, तो वो उसका थोड़ा छोटा पेपर था. तो उससे क्या होता था? वो सबसे ऊपर रखा जाता था. And when were people shopping? They were shopping when they were shitting. The catalogs were kept in the bathroom, stacked one above the other. तो सबसे ऊपर Sears होता था, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर Sears को मिलते थे. So it's not important to be innovator. You have to find one small thing which is different from others. One small differentiator can change your life. Rediff कैसे बना? Rediff.com. Those who are ganjas, sir, Rediff कैसे बना? If you remember, you don't know the story? I was in Rediff, so I know the story. Anybody else? They made email the fastest email, that's all. When, see, after news, it came to email, and after email, they came to messenger, right? These are the services they were providing. So they went on hitting fastest email in India. वो कैसे हुआ? सर्वर्स ज्यादा ऐड कर दो, आपकी ईमेल जो है फास्टर आपके पास पहुंच जाएगी, उसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो. जबकि एक पोर्टल पे आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो, राइट? यू हैव अ मैसेंजर, you have a classified ad, you have news, you have, work, you have stock market, blah, blah, blah. The only thing they did was fastest news, fastest email. Rocket email. How is Google? What is Google doing? Huh? Bullshit. Google is nothing else but a search engine. They had the vision to know that
Anybody who is on earth using internet will be searching. That's all. Right? Google is nothing else but search. वो डेटा वेटा तो बाद में आया यार. So you have to know the purpose of your enterprise. You have to know the purpose of your life. You have to integrate the purpose of your life to your enterprise. Then only you will succeed. But then you have to also know what you have to give. Right? The more you give, the more you get. That's all. Thank you very much. तो संदीप विज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन के लिए। तो अब हमारे साथ श्री साहिल मक्कड़ जी हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ द रीजन। I am proud of him. ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पंजाब एंजल्स नेटवर्क। तो अभी हम ये सेशन सिर्फ 10-1 मिनट का ही रखने वाले हैं। तो 10-1 मिनट में कोई आपका कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हो, जो वाकई आपका कुछ क्वेरी है दिमाग में, है ना, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, वही आप करें। जो आपका असल में कोई क्वेश्चन होना चाहिए रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप। तो पहले मैं मोहित से कहूँगा, कल एक क्वेश्चन लेकर मेरे पास आया था। तो मोहित, जो कल मेरे से आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सर से भी वही क्वेश्चन सेम पूछ लें। आई ऑलवेज से कि क्वेरीज आपके रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे तो ज्ञान तो आपको यूट्यूब पे भी आजकल बहुत मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, बट क्वेरीज कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करता ना वहाँ से कि कौन क्या कर रहा है। तो दिस इज द टाइम कि एनी क्वेरीज इन योर माइंड, क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड करता है ना। तो एनीवन इज ओपन फॉर क्वेश्चन। या मोहित, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो या इधर आ जाओ, माइक पे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, एनर्जी। दोस्तों, जैसे बिजनेस टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार हम बिजनेस मॉडल जो हमारा होता है, कस्टमर को कैसे पिच करना है, या फिर आप अपना बिजनेस कैसे वो आप सोल्यूशन निकालिए, कस्टमर को कैसे देख रहा हूँ। मोहित आप अपने वो कंपनी का नाम मत लेना, जो आपको प्रॉब्लम आई वो थोड़ा सा तो सर के रहा है। तो सर जैसे चले नहीं आवाज नहीं आ रही है। तो सर जैसे एक हमें सोल्यूशन लाया था, हमने कंपनी को दिया प्रोवाइड किया सोल्यूशन, तो हमने हमको पहले डेमो दिखाया, उनको पूरा सेटिस्फाई किया डेमो करके। पर जब हम उनको पिच किया कि चल आपको इतना कॉस्ट आएगा इसके और आप सारे में इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, तो उन्होंने हमें बहाने देना शुरू कर दिया कि हम तो एक एक करके लगवा लेंगे, या फिर अभी हमें इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं दिख रहा, कैसे कर सकते हैं। तो एक कस्टमर को अपना बेनिफिट को कैसे दिखाएगा सोल्यूशन। और आपका खर्चा कितना हो गया? तो जैसे हमारा तो 40,000 खर्चा होगा। 40,000। यस सर। तो खर्चा किस चीज का हो गया? सर जैसे हार्डवेयर लगाने का, उसके बाद में थोड़ा R&D का, तो कस्टम डिवाइस होती है, तो उस पे वो R&D करने का, और जो थोड़ा विजिट करने का बार बार, तो उस पे जो खर्चा, तो वो खर्चा हुआ है कि सर 2.5 महीने का। देखो पहली बात तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ CTO एंड CEO, है ना। जब आप टेक्निकल की बात करते हो ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। टेक्निकल एक्सपर्ट होना और CEO होना टोटली डिफरेंट बात है। CEO क्या है, तभी कहते हैं ना फाउंडर्स होते हैं, 3 फाउंडर्स, अब उसमें CEO कौन बने, हु शुड बी द CEO? टेक्निकल है, एवरीवन इज एक्सपर्ट इन टू देयर फील्ड एंड ऑल। CEO वो होता है जो टाइमली डिसीजन ले पाए, रिस्क टेकिंग ले पाए, और डिसीजन मेकिंग एज ए विजन, इन्हीं उसको पूछने चीजें करनी है, ठीक है। सो दे हैव टू टेक अ डिसीजन, CEO हैज टू टेक अ डिसीजन ऑन स्पॉट। दूसरी बात, आपने बोला कि मैंने खर्चा कर दिया, है ना, किसी के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उन्होंने फिर भी ना कर दी। दिस इज आई थिंक क्वेश्चन यही है ना आपका क्वेश्चन। तो देखो, एक तो खर्चा नहीं है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जिस दिन आप इसको जब तक खर्चा सोचते पाओगे ना, ग्रो नहीं कर पाओगे। स्टार्टअप इज ऑलवेज डूइंग इन्वेस्टमेंट, आइदर फॉर रिसर्च, आइदर फॉर एनीथिंग। तो आपने उसके लिए रिसर्च की, लेकिन शायद उसके लिए नहीं है, और आगे 5 लाइन में क्लाइंट आने वाले, वो आपकी एक रिसर्च डन होगी यार, ठीक है, रिसर्च डन होगी है। तो ये मत सोचो कि मेरा खर्चा हो गया 40,000 रुपये का, बेटर है उनसे ले लेते कॉस्ट, तो बेटर है, पर नहीं भी ले रहे तब भी तो करना ही है, क्योंकि आई हैव टू वैलिडेट माय पॉइंट। अनटिल अनलेस आई वैलिडेट माय पॉइंट, मेरे से क्यों बाय करेगा। दूसरी बात है, कस्टमर ना क्यों करता है, सिर्फ एक रीजन से, अगर उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती। अगर उसने आकर 2.5 महीने मेहनत कराई और उसकी एक्सपेक्टेशन थी सर्टन,
आप उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाए तो वो ना कर रहा है, ये तो वो भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बनाया तो उसको नहीं, आपने शायद कहते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है हु इज राम और अप्लाई करें हु इज श्याम, तो आपको मार्क्स मिलेंगे? हाँ। जैसे अभी अभी जो सर है अगर बोल रहे हैं जिस तरह टीच करना चाहिए जैसे आपने बताया तो सर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैसे आप काम कर रहे हैं? थर्ड पर्सन का क्या करना है, दुनिया में कुछ भी जाओगे तो यहाँ रूम में भी मैं एक वोटिंग कराता हूँ, तो आपको लगता है 100% उस चीज के लिए यस कहेंगे? देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड नोबडी इज परफेक्ट, नाइदर यू नाइदर मी, कोई भी नहीं है। 70% ठीक चल सकता है, लेकिन मेरे को अडेप्ट करना है तो 70% चल सकता है। ओपिनियन उसका लेना है जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। फॉर एग्जाम्पल, आप का किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाएगा ओपिनियन लेने? ब्रेन के डॉक्टर के पास। फिर होता यही प्रॉब्लम है। किसी को आपने सुना नहीं, गली में कोई भी होता है ये हार्ट की प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों को बताता है, वो अपना अपना, तू ना ये दवाई खा, तू ना ये कर, तू ये कर, है ना? तो दे से एवरीवन गिव्स देयर ओपिनियन और हम उसके हिसाब से सोच लेते हैं हाँ यार उसका। You have to take an expert opinion only. You have to take a, if there is a problem in heart, you have to take a advice only from a heart doctor. If there is a problem in brain, you have to take advice from brain doctor, not for anyone who is coming on your way. तो आपको जो प्रॉब्लम है ना अगर आपको लग रही है तो उसका एक ओपिनियन लेने जाना है तो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए वो, ना कि ऐसी किसी से भी पूछ रहे हैं आप ओपिनियन। अभी हमने ये मिस्टेक तो बाद में पता कि आप तो प्रोडक्ट के हिसाब से ना बनाया तो फिर जब आप जर्नी पे हो आप कैसे पता लगेगा जो रास्ते पे जा रहे हो सही बात पे करेक्ट? क्लैरिफिकेशन सबसे पहले, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। यू नो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? यू नो, बताओ। नहीं नहीं, वैसे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन इन इंग्लिश? आइडिया छोड़ दो, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज कम्युनिकेशन? है ना? तो अगर मैं चाइनीज में यहाँ बोलूँ तो मेरी कम्युनिकेशन हुई? समझ में आना चाहिए। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो समझ आएगा आपको, है ना? तो मैंने उसके लिए बोला रोको मत जाने दो, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? अभी मैं एग्जांपल ले देन आई कम बैक टू यू। रोको मत जाने दो, क्या बोला मैंने? रोकना है उसको, जाने को कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? रोको मत जाने दो, अगर नहीं जाने दे, रोको मत जाने दो, और मैं कह रहा हूँ जाने दो उसको, तो वही 4 वर्ड्स हैं लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग है। तो हिंदी बोलना भी क्या कम्युनिकेशन है? नहीं। आप कुछ कह रहे थे, then I'll come back to you. हाँ, वो तो वन साइड होगी ना, तो कम्युनिकेशन इज नेवर वन साइड। वॉइस मॉड्यूलेशन में फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक है, दैट इज आउट ऑफ 10 पार्ट दीज आर 1-2 पार्ट, है ना? बट व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वेज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैं हूँ किसी को समझा रहा हूँ मैं, तो आपको समझ आना चाहिए। अब उसी लाइन को अगर मैं कंप्लीट करूँ, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती? अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो उसको पूछें आपने रोकने के लिए बोला है कि जाने के लिए बोला है? तो वंस यू क्लैरिफाई कि आपने रोकने के लिए बोला है तब पता चलेगा मेरा क्या एक्चुअल प्रोसेस है, तो पता चल जाएगा ना नहीं नहीं रोकना है भाई, जाने नहीं देना, कि नहीं नहीं जाने देना, रोकना नहीं है भाई। समझ रहे बात? तो क्लैरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो इसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक दैट्स व्हाई रिटन कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, कि जो भी कह रहे हो ना कि उनको बोलो कि भाई आप लिख के दे दो मुझे क्या चाहिए, आपको डिस्कशन भी करो, लेकिन जहां आपको डाउट है, जितना अगर मैं बोल रहा हूँ ऑरेंज, अब यहाँ पे अब आप क्या सोच रहे हो, ऑरेंज कलर बोल रहा हूँ कि फ्रूट बोल रहा हूँ? पूछोगे तभी तो क्लैरिफाई होगा, है ना? कि अब तो आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चनियर्स बनाओ, अपनी चीजें करो, क्वेश्चनियर्स बनाओ, सब चीजें करो, एंड देन क्वेश्चन जब आप बनाओगे, चीजें करोगे, तब उतनी क्लैरिफिकेशन होगी। जब आप उनके पास वापस जाओ एक क्वेश्चन बना के, उनसे बोलो कोई कॉस्ट नहीं, लेकिन आई वांट टू पिच अगेन, क्या आपके ना जो जो रिक्वायरमेंट थी आप उनको ये बोलो कि प्लीज गिव अस फीडबैक कि हमारे में क्या कमी थी, हमने क्या कुछ कमी छोड़ दी है, चीजें छोड़ दी है। हाँ, उनसे बोलो कि अगर तो पैसे का चक्कर है फिर एक सेकेंडरी बात है कि तुम्हारे पास बजट नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन अगर मैं कहीं पर तो आई वांट टू कम बैक अगेन। ठीक है, तो फीडबैक लो उनसे जाके दोबारा। फीडबैक थी कम्युनिकेशन है कि क्या कमियां थी, वर्क ऑन दोज मिसिंग एंड देन कम बैक। इसलिए जब आप आइडिया के ऊपर काम करते हो ना, वर्क ऑन योर आइडिया, जो आप मार्केट में जाके पहले पूछो कि जो आप मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आइडिया बना रहा हूँ मैं, दुनिया में कोई एक स्टार्टअप है कि कहेगा मैं बम नहीं फोड़ रहा, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं बना रहा आइडिया, एवरीवन सेज आई एम डूइंग गुड एंड ये तो चलेगा, कौन नहीं चाहता, चलना भी चाहिए। पॉइंट है आप कस्टमर को भी रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है? कस्टमर फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या मिसिंग लग रहा है, कैसे लग रहा है। जो आपके छोड़ के जा रहे हैं, कस्टमर आए थे और छोड़ के जा रहे हैं, उनसे फीडबैक लेने का मस्ट। ठीक है, तो और क्वेश्चन किसी का? थोड़ा लाउड बोल रहे हैं। क्या हमारे क्या कितना मार्केट है, लेकिन मार्केट को कैप्चर करने का मेथड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा। आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग किस मार्केटिंग एक्सपर्ट करते हैं आप? जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे वो आपको फिर मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, डॉक्टर के पास जाना होता है, तो ठीक पैसा तो कभी नहीं होता किसी, कई बार क्या करता है फिर वो? तब हम ऑनलाइन तब हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं पैसे के कहीं ना कहीं से, कि रिश्तेदार से कहीं से ढूंढ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं कि केमिस्ट के जाके कह देते हैं यार तो हर चीज की सुई दे देते हैं। जब मेरी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बड़ा है और उससे एडवाइस एक्सपर्ट जो नॉर्मल दे सकता हो तो नॉर्मल ले लिया होगा आपने, केमिस्ट वालों के पास तो आप जा ही रहे होगे, पर एडवाइस तभी मिली आपको। सही है, एक्सपर्ट के लेकर पैसे, तो पैसे तो अभी इतने सारे इंक्यूबेटर से 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्यों नहीं है पैसे ये नहीं पता, या तो वही आप राइट अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वही है पॉइंट कि आपको राइट पर्सन, राइट लोग चाहिए जो आपको राइट किया। वो पैसे भी मिलेंगे, लेकिन पैसे भी उसी को मिलेगा अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए हैं, अब कई यहाँ पे भिखारी है तब तो आप दे दोगे उसको, नहीं दोगे ना, क्यों नहीं दोगे? कि आपको पता वो वैल्यू कहाँ लगाएगा? नहीं, पॉइंट वही है कि पॉइंट सेम है हर जगह कि वो कहाँ पैसा लगाएगा, खराब कर देगा 100 रुपए, आपको यही है। एक बार सोचो, जिसके पास 100 करोड़ है वो आपको 1 करोड़ दे देगा? क्यों नहीं देगा? अगर वैल्यू लगेगी तो देगा, अगर उसको लगेगा आप वेस्टफुल कर दोगे तो नहीं देगा। सिंपल एज दैट। तो ह्यूमन साइकिक है ना, उसको लगना चाहिए आप में बिलीव, आप में बिलीव लगेगा तो फिर। और ये उसका नहीं है, कोई भी दुनिया पैसे दे रहा है, बैंक चले जाओ लोन लेने, इंक्यूबेटर चले जाओ लोन लेने, स्टार्टअप चले जाओ, कोई भी सर्विस सोचेगा ये इसको पैसे तो यूजफुल करे, सिंपल ही है। तो वो यूजफुल अगर आप प्लान है आपके पास यूज करने का, वो है। देखो ये तो हमें आइडियाज 100 में से 99 बहुत अच्छे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन के साथ साथ। वही उनका भी जो क्वेरी थी, अभी आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हो, अभी जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ले लो तो ज्यादा बेटर है कि नहीं? अब तुम्हारे पॉइंट पे आ रहा था, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या बोलने वाला था, समझ आएगा क्या बोल रहा था मैं? नहीं आएगा। मैं पॉइंट वो बोलने वाला था कि एग्जीक्यूशन के साथ साथ ना नीड अ प्रॉपर राइट पर्सन ऑन बोर्ड, जो कि आपको तभी रोल ऑफ मेंटर्स एडवाइजर्स आता है। आपके कौन है मेंटर एडवाइजर कौन? अभी फंसे हुए हो। इफ यू डोंट हैव अ मेंटर, आप किसी रिलीजन को मानते हो? किसको मानते? शिव जी इज लाइक ए गुरु और मेंटर एडवाइजर। कुछ भी होता है हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, चाहे मैं कहता हूँ फिजिकली जवाब नहीं देते, बट समटाइम इट हैपन, यू ऑलवेज नीड समवन, चाहे वो आगे से रिस्पॉन्ड ना करें, जिसको आप जाके बोल पाओ, जिसको आपको लगे कि हाँ यू नीड मेंटर एडवाइजर who help you out in your process, in your journey. That is a spiritual journey, but this is your startup journey. You need किसको चाहिए? अब स्टार्टअप का जो एक्सपर्ट है वो चाहिए आपको, है ना? ये स्टार्टअप एक्सपर्ट है या बिजनेस का एक्सपर्ट है, नीड समवन की जहाँ जहाँ आप फंसो वर्क करो, उसमें बैठ के कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा बाहर। इतना आप देख लोगे कितने इवेंट्स अटेंड किए साल में आपने एंटरप्रेन्योरशिप, इवन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट कितने अटेंड किए हैं? कितने कह रहा मैं? कितने अटेंड? नंबर बताओ। हर जगह रोज कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पे शायद तो मिल जाए, बात करो, 100 लोगों से बात करो, 99 ना कर देंगे, एक दे देगा ना ढंग के जवाब। अगर पैसे नहीं है तो वहाँ इवेंटों पे तो पैसे नहीं लग रहे हैं, कहीं पे रजिस्ट्रेशन होती है ना पेमेंट की, वहाँ पे भी मैं बता दूँ मूवी 3 इडियट वाली मूवी का हाल है, एक बार अंदर घुस गए कौन बच्चा बैठा है किसी को नहीं पता, तो यहाँ हजारों के इवेंट में कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, उन्होंने कई बार डिनर के कूपन रखे होते हैं, लंच करके मत खाओ ना, खाना जाके ज्ञान ले आओ, वहाँ पे जाके क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। मिलो 100 लोगों से, जितने लोगों से मिलोगे कुछ ना कुछ तो बात करोगे, पर पहले आपको बता दो मेरी प्रॉब्लम क्या है,
क्वेश्चन भी तो राइट क्वेश्चन है, कोई आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने वाला, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है, आपके साथ डिस्कस करते हैं, आप आके नोट करो, लिखो, खुद ब्रेनस्टॉर्म करोगे, इन्फॉर्मेशन जरूरी सबकी माननी है, ये देखो कौन से इंप्लीमेंट हो सकती है, कौन से बायपास, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। चैट जीपीटी यूज करते हो, ये ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए, गूगल क्या है, गूगल के अंदर कोई भी आर्थिक ज्ञान दे, नर्सरी का बच्चा चेक करते हो उसका बैकग्राउंड, गूगल इज ना टेल्स यू, लाइक मैं बोलता हूँ कोई वो सबसे अच्छा टूल है जो मुझे बताता है ढूंढने में कीवर्ड, लेकिन उन कीवर्ड्स को लेके जाके आपको रिसर्च टूल में ढूंढने हैं, पहले मुझे पता दो क्या कीवर्ड डालने हैं, कीवर्ड नहीं पता होंगे तो सर्च क्या करोगे। तो गूगल के अंदर जब हम अपना रैंडम थॉट डालते हैं ना, तो 100 चीजें आती है, उसमें मुझे कीवर्ड मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सुनो मत, लेकिन उनके वो कीवर्ड सुन लो, कीवर्ड के ऊपर सर्च करो, तो कीवर्ड के ऊपर सर्च करोगे ना, तो आपके चाहे जो मर्जी टूल यूज करो सही मिल जाएंगे। तो सर्च शुड बी स्पेसिफिक, राइट डायरेक्शन में जाना। आपने दिल्ली या सर्च अमृतसर करोगे तो राइट डायरेक्शन में नहीं पहुंचोगे, राइट कीवर्ड पता होना चाहिए दिल्ली जाने के लिए क्या रूट है, तभी पता। और क्वेश्चन, Currently, I share finance content on LinkedIn and YouTube. तो मेरे को रोज थॉट आता है कि अगर मैं कोई फाइनेंस कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे को बिना कुछ देखे करते जाना चाहिए, या मेरे को मतलब मेरे दिमाग में आता है कि कुछ यूनिक बनाऊँ, तो उसके चक्कर में कभी कभी रह जाता है, तो फिर जो दिमाग एक कंटेंट उसके ऊपर डाल क्यों रहे? मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मेन कंटेंट डाल रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को फाइनेंस की एजुकेशन मेरा मेन की बात कर रहे पर्सनल है। तो कैसे अपने पैसे को मैनेज करे, बजटिंग करे, कैसे इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करे, मेन अपने आप से। लेकिन कैमरे से डाल रहा है हर की वीडियो, आपकी एक्सपर्टीज कैसे है? आर यू क्वालिफाइड इनफ टू पुट दैट पर्सन फाइनेंस? सर करंटली आई हैव डन NIS 2 सर्टिफिकेशन, और मैं पिछले 3-4 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्वालिफिकेशन डाली है आपने? उसमें डालता हूँ, और साथ में मैं CF पे काफी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो भी इसी के अंदर है। बस प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो कि जस्ट अपनी विजिबिलिटी चाह रहे हो? सर मेरे को एक वो चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि मेरी ऑडियंस डेवलप हो जाए, चाहे 5,000 ही हो। पहले बात में ले रहा है ना, ये नहीं कि चले वेला बैठो वीडियो तो बनाओ, वो क्या है कि विजिबिलिटी लाना, कि अपने आप को खुश होना कि यार मेरे को 100 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं ना, तो फिर वो पर्पज है तो बनाते रहो, फिर टेंशन मत लो कितनी अच्छी बना रहे हो कितनी खराब बना रहे हो, ठीक है, कितनी अच्छी बना रहे हो कितनी, उसकी टेंशन छोड़ दो आप, फिर बनाते रहो वीडियो, जो मन में आ रहा है बोलते रहो, यहाँ पे खड़े हो बाहर खड़े हो रोड पे वीडियो बनाते रहो, चलते फिरते रोड जितनी वीडियोस बनानी है बनाते रहो, कोई वो चक्कर ही नहीं है कि मेरे को इसमें ग्राफिक डालने हैं, मेरे को ये डालना है, मेरे को वो करना है, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं होना चाहिए तभी फॉलो, अगर आपको फॉलोअर बढ़ाने का, अगर आपको उसमें से कोई बिजनेस लेना है तो अलग बात है, you have to define your purpose why you are doing the videos, until if you have a purpose तो फिर उसको कैसे उसको डिफाइन करोगे? पर्पज इज टू एजुकेट, सोशल काम है, सोशल काम है तो पैसे चार्ज करने हैं, फ्री में एजुकेट करना। हाँ तो फिर अपनी विजिबिलिटी चाह रहे हो भाई, सिंपल। कितने लेक्चर लिए तुमने स्कूलों में जाके, अभी कॉलेज में लेक्चर लिए फ्री में जाके? सर अभी पर्पस नहीं है भाई, वो ज्ञान बांटना पर्पस नहीं है तुम्हारा, फिर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना है कि मेरे को 1000 लोग जानने हैं, ठीक है, लेट्स बी क्लियर, जितना आप थॉट में क्लियर होगे ना उतना अच्छा इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपका थॉट क्लियर है मेरी विजिबिलिटी 1000 लोग दुनिया में जाने, करोड़ लोग मुझे जाने, मेरे फॉलोअर्स हो, ठीक है, और जब मेरे करोड़ फॉलोअर होंगे तो लोग मेरे को एडवर्टीजमेंट लेके आएंगे, ठीक है, तो मैं पैसे कमाऊंगा, तो वो भी एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, लेकिन मेरे को भी फॉलोअर बढ़ाने हैं, लेकिन अगर मेरे को फ्री में देना है, मेरे को कुछ नहीं करना, तो जाओ ना गली गली में ज्ञान दो, क्यों नहीं दे रहे हो?
ज्ञान, ऑनलाइन ज्ञान कितना जा रहा है? 30 सेकंड का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। 3 मिनट के ज्ञान से कुछ हुआ आज तक किसी का? हाँ, लेकिन कहीं जाके आप एक ग्रुप में 10 बच्चों के बीच में बैठोगे, उनको सिखाओगे, उनको बोलोगे मैं तुम्हें 1 महीना रोज ट्रेन करूंगा कैसे मैनेज करना है, कुछ भी कर लेके आना, तो 10 बच्चों का सुधार होगा। ठीक है, तो फ्री में करना चाहते हो पर्पस अलग है, पैसे कमाना चाहते हो पर्पस अलग है। फाइंड योर पर्पस, आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। गुड आफ्टरनून सर। तो जैसे आपने बताया कि हम इवेंट्स अटेंड करते हैं और लोगों के पास मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स होते हैं, तो हम उनके पास अपना आइडिया लेके कैसे जाएं? विद इन 2 मिनट्स हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करें, वो आप गाइड करें। नो सर, आई एम न्यू इन। उसमें पूरे बेसिक कंसेप्ट है कि फाउंडर्स एग्रीमेंट क्या होता है, टर्म शीट क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो ऐसे लेक्चर नहीं है, मैं भी सेशन ले रहा था उसको रिकॉर्डेड नहीं है कि वो ऐसे जैसे एक वाईफाई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, बट आपको अंडरस्टैंड। तो ना एलिवेटर एक होती है पिच, जो पिच डेक बनाते हैं, वो कितने पेजेस की होती है बता आपको? नॉर्मल पिच डेक होती है पूरा प्लान कितने होते हैं? पेज डेक तो स्टार्टअप को कितने पेज डेक का पेजेस होते हैं? आपको मास्टर पेज डेक 30 पेज की होती नहीं है, तुमने 30 पेज की नहीं, तो मास्टर पेज डेक होती है 30 पेज की, लेकिन हर बारी किसी को भेजनी है वो 10 से 12 पेज की होगी। ठीक है, हर एक को सेम पेज नहीं भेजी जाती है, ऑडियंस अलग है, आप अलग हो, आप अलग हो, आप अलग हो, पहले उसको समझो, देखो उसको कौन से 12 पेज भेजिए भेजोगे। ठीक है, लेकिन मास्टर पेज डेक यही सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टार्टअप, वही पेज डेक हर एक को भेज रहे हैं। क्यों फर्क है भाई? वो ऑडियंस अलग है, वो फाइनेंस का बैकग्राउंड है, उसको 4 से फाइनेंस की नहीं लेगा स्टार्टअप बेकार। बेसिक तो होनी चाहिए 5-6, लेकिन उसके बाद एक वो बंदा कौन है जिसको आप भेज लो, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, है ना। समबडी फॉर फाइनेंस हुआ, कोई मार्केटिंग है तो उसको 4 से मार्केटिंग की चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको वही ढूंढना है कि तुम उसके साथ चलो, क्योंकि वो जिसका बैकग्राउंड उसको वही दिखता है। ठीक है, वही सबसे पहले दिखे, है ना। देयर इज अ सिचुएशन आई विल टेल यू कि एक बार एक गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ था रोड, कुछ लोग गुजर रहे हैं वहाँ, सबसे पहले वहाँ से एक मैकेनिक गुजर, गाड़ी का एक्सीडेंट, वो क्या देख रहा है? तो देख रहा है गाड़ी का कितना नुकसान हो गया, लाइट गई, बेस का तो 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद एक डॉक्टर गुजर रहा है, वो गाड़ी देख रहा है नहीं, वो क्या देख रहा है? पेशेंट को कितनी चोटें लगी, इसका तो 5 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे, इसका तो एक देख ले क्या बैठ गए। पुलिस वाला आया ना, वो पेशेंट को देख रहा है ना गाड़ी को देख रहा है, कहता है किसने रूल तोड़ा? उसे चोटों में खून आ रहा है, उसको वो नहीं देख रहा, वो कह रहा रूल किसने तोड़ा? क्योंकि मेरे को मेरी फाइल बनानी है भाई, मेरी फाइल में मेरे को चाहिए। सेम सिचुएशन में हर कोई अलग अलग है ना। तो हम क्या करते हैं, वो पिक्चर जिसमें तो ज्यादा देखना चाहते हो उसको वही दिखाओगे ना, तो बेटर। सबको सेम चीज दिखाओ तो वो अपना अपना ढूंढेंगे, फिर ना कर देंगे। उसको जो देखना चाहता है उसको वही दिखाओ ना, बाकी क्यों दिखा रहे हो? अगर किसी गाड़ी नहीं देखी तो आपको दिखा रहे हो। तो एक होता है एलिवेटर पे। एलिवेटर क्या होता है? ये कंसेप्ट कहाँ से है? क्या होता है, आप देखो यूएस वगैरह में तो बात करनी है, बाहर जाके कर लो भाई, मेरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बाहर जाके बात कर लो, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है बीच में, क्या बात करने को बाहर जाके कर सुना है नहीं सुना? हाँ तो करो, तुमको लग रहा है कि क्या होता है। एलिवेटर कैसे बना ना, लोगों को ऐसे टाइम भी दे, बड़े इन्वेस्टर हैं, टाइम नहीं है उनके पास। स्टार्टअप क्या होता था, उसके लिफ्ट रूम हो जाता था, जैसे लिफ्ट रूम गया और ग्राउंड फ्लोर से 22 बिल्डिंग 25 बिल्डिंग फ्लोर है ना, उसके अंदर अपना कंसेप्ट उसको अपनाना है, ताकि वो किसी आ जाए तरह सही है, चलो 30 सेकंड पे, ठीक है 50 सेकंड पे, 30 सेकंड में अपने कंसेप्ट को आपको बताना है क्या कर रहा हूँ। ये नहीं बताना मेरी सेल इतनी है, वो नहीं, मैं क्या बम फोड़ रहा हूँ, मैं क्या बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अगर वो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दी ना क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बताने में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसे पैसे कमाऊंगा, सिंपल है ना। तो वो है, लेकिन अगर आप किसी सोल्यूशन मांगे, बोलो मेरी सर ये प्रॉब्लम, आप सोल्यूशन बताओ इसका क्या होता है। ठीक है, आपको भी लगता है मेरा सोल्यूशन, तो क्लैरिफाई करो। मैंने में कम्युनिकेशन ग्रुप को बस जाने दो, आपको नहीं तो आपको खुद एक प्रॉब्लम है, आपको खुद लग रहा है सोल्यूशन है, तो सर ये प्रॉब्लम है क्या, और मेरे साथ से ये सोल्यूशन क्या, मैं ठीक हूँ? तो बोलेंगे कि हाँ ठीक हो कि नहीं ठीक हो, मेरे साथ से क्या। ठीक है, एक बंदे की 1 मिनट की एडवाइस पूरी दुनिया चेंज कर सकती है। एक मूवी, एक बुक,
दुनिया के लोगों पे उनकी चीज नहीं है, सब कॉन्फिडेंस से बंदे ने क्या as many as लोगों से इंटरेक्ट करो। ये यूट्यूब वीडियो नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्या मेरी वीडियो जाके देखोगे इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, अब सामने इतनी एनर्जी आप देखो, ठीक है, क्योंकि वीडियो में कोई कंसंट्रेशन आ ही नहीं सकती, मंच योर एट लाइव एनर्जी अब मैचिंग, जितना आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से बेटर। People will have the difference of opinion, तो डिफरेंट ओपिनियन को लेके कोई आपको ये भी बोल देगा यार ये तो बेकार है, क्यों कर रहा था बंद कर। अरे तो ये कहा था किसी ने, अमेजन वाले को 100 लोगों ने ये बोला था बंद कर, पर आप अगर हो तो ओनली वन थिंग इज सक्सेसफुल, दैट इज कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहो, परसिस्टेंट रहो, रिजल्ट एडवाइस नहीं दिया। देखो अब अगेन पहली बार सुन लेना यहाँ पे सारे दोबारा, एडवाइजर उसमें एक होता है Q&A और एक होता है एडवाइजरी। Q&A होता है आपने जो सवाल पूछे जितने मेरे को समझ आया उतने रिप्लाई किया। एडवाइजरी होता है पूरा डिटेल आपके प्रोडक्ट को समझना, आपको समझना, 10 दिन 100 दिन लगा के फिर एडवाइजरी देना। आई हैव नॉट एडवाइज यू एनीथिंग, आई हैव जस्ट कॉल्ड गिवन अ Q&A। आपने बोला कि कॉलेज और स्कूल में स्टार्ट करो चाहे 10 बच्चे हो, तो वो कैसे मतलब स्टार्ट करो, हाउ टू उनको कॉलेज और कितने लोग बैठे तो इंटरेक्ट करोगे, सब जगह मिलते हैं लोग, ढूंढने जाओगे तो सब मिलेगा, नहीं ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सुबह 4 बजे उठना। पता किसको, इट्स ऑलवेज देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब, यू वर्सेस यू, ठीक है, यू वर्सेस यू, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। सुबह 4 बजे उठना नहीं उठना वो आप ही डिसाइड कर रहे हो, मेरे को काम करना है नहीं करना वो आप ही डिसाइड कर रहे हो, मेरे को बड़ा नहीं बनना आप ही डिसाइड कर रहे हो, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, नोबडी एल्स इज कमिंग, है ना। तो बहाने ढूंढता कौन है, हम ही। काम कौन करता है, हम ही। या तो बहाने ढूंढ लो या काम कर लो, ठीक है। इट्स ऑलवेज यू, जहाँ ढूंढने जाओगे सब मिलेंगे, लेकिन ढूंढने तो जाओ। आप बात थोड़ा बता सकते कि कॉलेज या स्कूल में जाके मानेंगे तो नहीं अपने जैसे प्रिंसिपल, और तो कैसे मतलब स्टार्ट, 20% ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मैं यही बोलता हूँ सीए बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे, कि सीए बोलता हूँ सब मेरी सुनते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अपीयरेंस, हाउ यू आर अपेयरिंग योर, हाउ फॉर्मली यू आर ड्रेस्ड, ठीक है। वो आजकल कैजुअल का टी-शर्ट का दिखा है, पॉइंट है द बेस्ट वे यू ड्रेस अप एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, पीपल विल लिसन टू यू, ठीक है। और जितना आप सीनियर पे जाना उतना सुनेंगे, जितना आप पीएन के पास जाओगे ना एक कंपनी में उतना आपको बाहर बताएगा, जितना रोड साइड वो पार्किंग वाला हुआ कह रहे चल दौड़े यहाँ से, वो नहीं पता आप कौन है ना, उसको आपको समझाना है। जितना आप लेवल पे जाओगे पीएन से, ऑफिसर से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर तक जाओगे ना, उतनी आपके पास उतने ध्यान से सुनो। तो ट्राई टू गो टू मोस्ट सीनियर, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इनटू इट। तो क्यों नहीं जाते हैं, यार पता नहीं वो क्या बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे क्या करेंगे। भाई अगर आप सही हो ना तो जहाँ मर्जी जाओ, गलत हो तो आपको डरोगे, सही हो तो जाओ ना, क्या होगा जाते ज्यादा, नहीं होगी, नहीं होगी। तो अमेजन वाले को 330 प्रेजेंटेशन में पहली फंडिंग मिली थी, 329 में ना ही करी थी, ठीक है। ये ना से मत डरो, आप मिल सकती है, क्या लगे और As an angel investor, what you look for in a startup to invest? फाउंडर who can execute, प्लान तो सारे बना देंगे, ये भाई खैदी को आप बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कौन करता है, फाउंडर who can execute their plan, मेरा प्लान नहीं अपना प्लान नहीं, लेकिन जो बोल रहा है क्या वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो कर सकता है तो ठीक है, देन वी आर रेडी, क्योंकि फ्यूचर तो सबको पता है, किसी को नहीं पता, जो सबको पता है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप कितना उसमें हिम्मत रखते हो लगे रहने की, कितने आपको डामाडोली हो जाओगे 6 महीने बाद, कितना कंसिस्टेंट हो। इसीलिए जितने फुल टाइम लोग कहीं और नौकरी कर रहे होते हैं उनको कभी नहीं फंडिंग मिलती, क्योंकि वो अभी नहीं इसको विश्वास दे रहे हो आइडिया में, अपने आइडिया में विश्वास नहीं, विश्वास करो उसमें, आपको अपने आइडिया पे विश्वास है, आप तो फुल टाइम उसमें काम करोगे, है ना।
तो आपको ही अपने आइडिया पे विश्वास है तो कोई और कैसे विश्वास करे आपके ऊपर पैसे कैसे? Founder the founder and founder beginning. सर एक बार वो वीडियोस का भी बता देंगे जो आप बता रहे थे कहाँ पे उसका एड्रेस? आप इंजन नेटवर्क तो बहुत सारी वीडियोस है अंदर एक आइडिया टू आईपीओ पंजाब इंजन नेटवर्क लिखा हुआ है सर प्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है। पंजाब इंजन नेटवर्क है मेरी कंपनी का नाम, तो यूट्यूब चैनल है पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, पंजाब PUNG भी यहाँ पे इंजन ANGLS नेटवर्क उसका यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे सारे इवेंट्स की, ठीक है। और लेकिन उसमें आप मेरी वीडियो एक है जो बोल रहा हूँ, ऐसे आई हैव टू बुक आल्सो, आपको स्टडी करनी सकती है बाद में PH है। वन इज हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया, तो आपको इंडिया में पैसे कैसे रेज करने हैं, क्या करना है, क्या होना चाहिए, कितने फंड्स हैं, क्या प्रोसेस होने से सब है। सेकंड है हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल स्कोर इनटू फाइनेंशियल, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो क्या करना है, दैट बट अल्टीमेटली उसके अंदर मेरे बहुत सारे सेशंस हैं, तो आप उसको कर सकते हो, लिंक्डइन फेसबुक एंड ऑल को भी अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे रेगुलर उसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आपको एक्सपर्ट्स को सुनना है तो हाँ इन्वेस्टर रिलेटेड वीडियोस हैं, एंटरप्रेन्योर रिलेटेड वीडियोस हैं, उनके इंटरेक्शंस हैं, चीजें हैं, सब चेक करो। पंजाब बिजनेस पे आपको 200-300 वीडियोस मिलेगी, ज़्यादा भी होती है आइडिया। क्वेश्चन डन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। से कोई क्वेरी हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मनु सर हैं यहाँ पे, आई थिंक यू एवरीवन नोज मनु सर है ना, तो मनु सर के थ्रू मुझे कभी भी अप्रोच करो, अदर सारी टीम जानती है मुझे, तो किसी के थ्रू भी आप करोगे अप्रोच तो आई एम एबल टू हेल्प आउट इन एनी, ठीक है। साहिल मक्कड़, CA साहिल मक्कड़ होगा, CA साहिल मक्कड़, पंजाब इंजन डालोगे नेटवर्क तो आई थिंक उसके ऊपर वही आ जाता है, ये साहिल मक्कड़ और पंजाब इंजन नेटवर्क आता है। हाँ हाँ ओके क्या ऑनलाइन